Okay, hello everyone. Now, in this video tutorial, we'll discuss about a more topic called construction of finite state machines. Okay, so as per the name of this topic, it says that we're discussing about the terminologies through which how we can develop a machine or design a machine or construct a machine, either it is a Mealy machine or a Muru machine, and that generates some kind of outputs which is required as per the problem defined. Okay, so now as we have that question here. Question number 1 says that construct a Mealy machine that generates complement for a given input binary string. So we have this question. We need to solve or we need to design a Mealy machine. Okay, so that generates the complement of a binary input binary string. So इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं हमें एक मीले मशीन को डिज़ाइन करना है और मीले मशीन को डिज़ाइन करते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है या कंस्ट्रक्ट करना है। इस वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो मीले मशीन है इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। इट जनरेट्स द आउटपुट एज द कॉम्प्लीमेंट, इट जनरेट्स द कॉम्प्लीमेंट फॉर अ गिवन इनपुट बाइनरी स्ट्रिंग, यानी कि जो हम बाइनरी स्ट्रिंग इनपुट में देंगे इस मशीन को, ये मशीन उस बाइनरी स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग जो है कॉम्प्लीमेंट जनरेट यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो जनरेट करके दे। तो सबसे पहले हम एक we see it is meaning of complement. So the binary string we can say एक बाइनरी स्ट्रिंग जो है वो किस तरह की होती है। तो कोई भी हम एक बाइनरी स्ट्रिंग अगर लें, ओके, बाइनरी नंबर या बाइनरी स्ट्रिंग, सो हाउ इट looks like we can say that 0 1 1 0 1 0 0 1 like this is what we call the binary string. एक बाइनरी स्ट्रिंग कुछ इस तरह से होती है जो यानी कि द सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस। ओके, जीरो और वन के जो कॉम्बिनेशंस हैं, अरेंजमेंट्स हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं बाइनरी स्ट्रिंग्स। नाउ अब अगर हम इसके वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें, सो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस स्ट्रिंग इज one's complement or the complement of that binary string is we just need to complement the individual bits. Okay, so in this case we can say input 0, the complement is 1. For 1 we have 0, again 0, so it will be 1, this is 0, 1 1 and 0. Okay, so we have these input binary string and this is what we call the input binary string and its corresponding one's complement number. Okay, so now हमें एक ऐसी मीले मशीन ड्रॉ करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि इस तरह के इनपुट को इस तरह के आउटपुट में चेंज कर सके। ओके, सो द सिंपलेस्ट मशीन वी कैन ड्रॉ हियर एज let we have the Q naught is a initial state of this machine. Now अगर हम इनपुट यहाँ ध्यान से देखें, अगर हम इनपुट 0 दे रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यू हमें क्या मिल रही है? इट जनरेट्स द करस्पॉन्डिंग आउटपुट एज 1. सो वी कैन सी हियर इफ आई एम गिविंग इनपुट वैल्यू एज 0, इट विल जनरेट द आउटपुट वैल्यू एज 1. Okay, so this is what we call the output and this is what we call the input. If you are giving 1 as input, the corresponding output or the ones complement of this 1 is called 0. Okay, so we need to make the transitions over this machine to be like that. If we are giving input as 0, it will generate the output as 1, and if we are providing the input in the form of 1, it will convert that input to its complement called a 0. So for this we can just make a transition here as, or you can say this is what we call the input 0. We are giving input 0, the corresponding output that this machine will generate is nothing but it will complement the value of 0 as 1. Okay, and similarly if you are giving input as 1, it will convert that 1, or we can say it will generate
the corresponding complement of this input 1 as 0. Okay, so it is the simplest machine or the simplest form of machine, a Mealy machine, that generates the complement for a given input binary string. Now why we are saying this is a Mealy machine? Because we are representing the input values with the transitions or with the input values over the transitions. Okay, so अगर हम 0 देते हैं तो वो उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, अगर हम 1 देते हैं तो 0 में कन्वर्ट कर देगा. मतलब अगर मैं इस स्टेट पर, अब मैं एक छोटी सी स्ट्रिंग लेता हूँ. ओके, आई एम टेकिंग अ string for the example that we have the string as 0 1 1 0. Just for example, if you are taking a string as 0 1 1 0, if you are passing this string over this Mealy machine, how it reacts? So we just started with the initial state, what we call the Q0 state. At Q0 state, we are giving the input string as 0 1 1 0. So one by one, this machine will read these input symbols and generate the corresponding output values. Okay, so I'm writing the output values over here. So if it is 0 at Q0 state, the transition says if the input value is 0, if the input is 0, input alphabet is 0, so it will generate its corresponding output as 1. So we can say at Q0 state for 0, it reads that 0 and generate the output value as 1. Okay, then after reading that symbol Q0, the next input symbol is 1. Okay, so for now at Q0 state for 1, how it will react? So at Q0 state for 1, okay, in किस स्टेट पर आएगा? ट्रांजिशन itself is at a state called Q0 and it will generate the output as 0. So Q0 पर 1 के लिए अगर हम बात करें, Q0 पर 1 के लिए जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 0, और जो स्टेट हमें मिल रही है वो स्टेट कौन सी है? Q0 ही है. तो इस केस में वी कैन से इसने 0 रीड कर लिया और 1 रीड कर लिया. अब ये Q0 जो है अगला सिंबल रीड करेगी, क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रही है इसलिए हम Q0 ही लिख रहे हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड 1. द नेक्स्ट इनपुट सिंबल इज 1. ओके, नाउ Q0 पर 1 के लिए अगेन Q0 पर 1 इनपुट के लिए हम Q0 पर ही हैं और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? 0. सो एट Q0 स्टेट फॉर 1 वी हैव द आउटपुट एज 0 and the next state is Q0 itself. Okay, so next state is Q0 itself 0. Now here we have read that symbol, so this is 1 1 and 0. So we have already read these three symbols, and then we have the next symbol as 0. Now at Q0 state for 0, Q0 state for 0 we have 1, okay, as output, and it read that symbol, so we can say 0 1 1 0, and we are at Q0 state. So we have read all the given input symbols, given input alphabets, and then the corresponding output value is, we can write it as from up to the downwards direction, it will be the corresponding output for the given input string 0 1 1 0, it will be 1 0 0 1. This is what we call the output for the given input value. Okay, so as we can see here, this is what we call the output value for this machine. Okay, so 0 1 1 0, this is the input, and 1 0 0 1, the corresponding output values. How it generates the corresponding output as per the problem defined. Now जब आप इस प्रॉब्लम के लिए डायग्राम जो है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हम जिसको बोलते हैं, स्टेट डायग्राम हम बोलते हैं, जब हम वो ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जो अगला स्टेप हमारा होता है, दैट इज वी नीड टू डिफाइन दी 6 टपल्स. ओके, सो अब हमें क्या करना होगा, इस मशीन के करस्पॉन्डिंग 6 टपल्स जो हैं उनको हमें यहाँ फॉर्मली डिफाइन करना होगा इस मशीन के लिए. Okay, so we just need to define the 6 tuples. 6 tuples of machine M. Okay, so we can say that the 6 tuples are M. Symbolically, they are represented as Q, Q0, the summation sign, the delta, and then we can say
capital del, okay, and then we have lambda. So these are what we call the input, the 6 tuples. Now Q is defined the set of states. Now how many states we have in this machine? We have only one state, so we can say the set of states as Q naught. Okay, it's called the set of states. And what will be the initial state for this machine? We have only one state, which is the initial state as Q naught. So we can say Q naught is the initial state. Okay, then the next tuple is the set of input alphabets. So we can say the set of input alphabets are nothing but the binary strings. Okay, in the or we can say 0 or 1. The input strings are binary strings, so we have the input alphabets as 0, 1. So what we call the input alphabets. Okay, then the next is the output alphabets. So we can say the output set of output alphabets contains whenever we are converting or the complementing the binary string. So the output alphabets are also in the form of 0, 1. So we can say the output alphabets are also 0, 1. जब भी हम एक बाइनरी नंबर को या बाइनरी स्ट्रिंग को जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो जो आउटपुट में जो हमें स्ट्रिंग मिलती है वो भी बाइनरी फॉर्म में ही होती है, इसीलिए आउटपुट अल्फ़ाबेट्स क्या मिले हमें 0 और 1. So we have the 0, 1 as the output alphabets. Okay, and then the transition function, we can say that. So we have already defined it here with the help of this state diagram. We can say the transition function. Okay, transition function says at Q naught state for input 0, transition goes up to which state? Called Q naught. Q naught with 1, this is Q1. Okay, this is what we call the transition function. Similarly, the next tuple is what we called the output function, which is lambda, and we can say lambda defined as at Q naught state for input 0, we have the output as 1, and at Q naught state with input 1, it will generate the corresponding output as 0. So we can see here these are two called the transition function and this is what we call the transition function, and this one is the output function. Okay, so you can see here this is what we call the machine state diagram of this machine of the based on that problem given. Okay, मशीन के अंदर ये ट्रांजिशंस हैं. इनपुट 0 देने पर हम मशीन Q0 पर ही रहेंगे और हमें आउटपुट 1 मिलेगा. मशीन Q0 पर 1 देने पर हमें हम Q0 पर ही रहेंगे और हमें आउटपुट 0 मिले. और इसको हमने समझा कि ये कैसे काम कर रहा है, किस तरह से ये करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यू जनरेट कर रहा है. दिस इज व्हाट वी कॉल द आउटपुट वैल्यूज. ओके, सो और ये जो 6 टपल्स हैं ये हमने डिफाइन किए करस्पॉन्डिंग टू दिस डायग्राम और द मशीन. ओके, सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हुआ होगा. हमने स्टेट एक ही इसीलिए रखी है क्योंकि अभी हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे जिनमें हम देखेंगे एक से ज़्यादा स्टेट्स पॉसिबल होंगी. यहाँ हमने स्टेट एक ही इसीलिए रखी क्योंकि हमें हमारा जो कंसर्न है वो आउटपुट से रिलेटेड है. हमें ये नहीं देखना है कि सिंबल कितनी बार भी आए, कोई सा भी आए, हमें सिर्फ उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट देखना था. हमें उससे कंसर्न था हमारा, या यूँ कहें कि हमें उसको ध्यान में रखना था कि अगर 0 है तो 1 हो जाए, अगर 1 है तो 0 हो जाए. हम एक ही स्टेट पर उस काम को परफॉर्म कर सकते थे. ओके, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम एक ही स्टेट पर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हमें स्टेट चेंज करनी होती है.